नाज़रीन, आपको क्या लग रहा है ये लोग क्यों चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है? दरअसल माजरा ये है, आसाम की हमंता सरकार ने 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया, जिसमें से 9 औरतें हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान वाले चीख और चिल्ला रहे हैं, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। आखिर इनकी चीख व पुकार सुनने वाला कौन होगा? इन मुसलमानों की पुरसान हाल पूछने वाला कोई नहीं। सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म किया जाता है। मुसलमानों को ज़हनी, जिस्मानी हर तरीक़े से परेशान किया जाता है। क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए इस मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दी थी? वोट के वक्त, इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के हमदर्द बनने वाले हजरात आज वो भी खामोश बैठे हैं। अल्लाह ही इन मुसलमानों की मुहाफ़िज़ है। अल्लाह इन मुसलमानों की मदद अता फ़रमाए। যে মানুষটা নিচে মানুষটা এই মানুহটো হ'ল কুমাৰবাৰীৰ মানুহ, কুমাৰ মানুহ। ই কিবা কাৰণত নদী ভাঙাৰ পিছত আহি বৰবাৰীতে ঘৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু বৰ্তমান গুমাত তাত ভোট চলি আছে। কিন্তু বৰবাৰীতে এই ঘৰ কৰাৰ কাৰণে 97 ভোটটো দি হৈ যায়। দি হোৱাৰ পিছত তাৰ ভণ্টিৰ ভোটটো দি হৈ যায়। দি হোৱাৰ পিছত তাৰ ভণ্টিৰ ভোট সেই কাগজেৰে ভোটটো ঠিক হৈ যায়। ই তাৰমানে নদী ভাঙাৰ পিছত আকৌ নদী ভাঙাৰ পিছত সেই গ'ল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত। তাতে তাই ঘৰ বস্তি কৰি আছে বা কিবা খেতি খোলা কৰি তাতে বসবাস কৰি আছে। ইফালে তাৰ মাটি নাই, চব মাটি ঘৰত নদী খোৱাই উঠাই লৈ গৈছে। তেতিয়া তাই যেতিয়া আৰু হাকিমে তাৰ কেছটো চলি আছে, তাই মেজিষ্ট্ৰেটে সুধিছে যে আপুনি ক'ত থাকে? সি মানুহটো কৈছে যে আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকোঁ, আমি পৰিয়ালটো লৈ তাতে কিবা মই অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে এই কেছটো তাৰ বেয়া কৰি ফেলছে। সেইকাৰণে